It's January 26, 2022. The day marks 72 years of Indian Constitution coming into effect. It's our Republic Day. Congratulations, wish you a very happy Republic Day. You know the significance of this day? I mean, of course, it's the Republic Day, so all of you are aware of that. But what is so special about this day? Why did we choose January 26 and not some other date? You're aware that British left India in a hurry, and so that happened on August 15, 1947. So Mountbatten chose August 15 because that marked the second anniversary of the Japanese surrender to the Allied army. So that kind of resonated with the British pride, the imperial pride, not as much with the national sentiment. So we chose a day, January 26, that commemorated the declaration, the proclamation of Poorn Swaraj, total independence, by the Indians. That happened in 1930. So that's the significance of the day. So the constitution was enacted and adopted on November 26, 1949, but it happened only 2 months later. That India was declared a sovereign republic. So that's some history, some general knowledge for you. So India has come a long way in all these years. State Bank of India is one of those great institutions, glorious institutions that this country has produced with a legacy of over 200 years. Wonderful. But still, like our country, fine, so many highs and a few lows as well. So it's there as well. And one such thing is its recruitment process. So yesterday in the night, I think around 11 or something, they suddenly came up with the result of the probationary officer exam, the main exam result, the ones shortlisted for the interview. It was a surprise. I don't know. They wanted to wish a happy Republic Day to all the successful candidates. Don't know. I mean, this process leaves a lot to be desired. We as young Indians, I can still call myself young, say so many things about the country, the institutions, though there are so many problems. But guys, if you think about it, then this day to talk about it. If you think about it, when British left India, we were a poor country. We were largely uneducated, rather illiterate. There's a difference, right? There was food scarcity. There was this great famine, Bengal famine, like 4 years back, just 4 years back. Partition was still fresh, the wounds, communal tensions. There were so many challenges, and all these years we have still come a long way. So we have a right to crib and complain. Let's just appreciate what all has been done. We have created wonderful institutions, and this bank is one of them. But yes, as happens with anything that's Indian cricket, Indian politics, Indian Bollywood, there are some glorious highs and some not so good, terrible lows. So that kind of reflects the country only. So yeah, there's a lot of stuff, good stuff that has been done, and some not so good things that leave something to be desired, right? So that's there. So let's not talk about today, at least talk about the problems with the thing. Let's accept it. There's a huge problem with the recruitment process of the State Bank of India. It's like so obscure. Why could they have not given you a date on which the result would be declared? I still don't understand. Why can they not do it with all their might? It's the State Bank of India. I mean, it's a large institution. But yesterday, how did you check the result? Let's talk about it. Through PDFs floating on the Telegram group. Such a shame for an institution of this size. Till morning, I was not really sure if this is the real result. And it happens all the time. Nothing is okay. But you know what? As I said, we have achieved so much in all these years, and we have missed out on so many other things. But one thing is sure, hope, that is there. We could have been much worse. So this could have been much worse. The vacancies could not have been there. It was possible. So it's there. You have been shortlisted, and now you should be looking forward to the interview. What is done is done. Fine. कल रात खराब कर दी उन्होंने बहुत लोग की, जिनका हुआ they were happy about it, not really sure if this is a real result. जिनका नहीं हुआ बेचारे वैसे ही परेशान थे. They were hoping that this turns out to be another fake alarm. Just like that, हो गया. Tough luck to those who missed out. Congratulations to those who made it. Now it's the next stage, next step, next lap, the most important one. They'll get you into that glorious institution. First thing, when is it going to happen? The next round, the interviews. That's the obvious question. Again, those wonderful uncertainties about the State Bank of India. I don't think it's going to happen at least for the next week or 10 days, but it can start anytime in February. That's truth. सच्चाई यही है कि और आपको जाना पड़ेगा. You do not have a choice. You'll have to go to the interview whenever they call you. Fine. तो prepare कर लो अपने आप को, and you have to take it with all your heart, all your
power, with all your brain, all your mind, all your preparation. कोई choice नहीं है हमारे पास. जो बोलना है उनको बोल लेना, प्रोसेस ऐसा ही है, वो है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, वी डू नॉट कम टू नो ऑफ थिंग्स, बट इट इज़ वॉट इट इज़. दिस विल नॉट चेंज. लेट्स होप इट चेंजेस सम टाइम टू सम पॉइंट इन फ्यूचर, बट राइट नाउ इट्स लाइक दैट. पहली चीज़ क्या है, भूल जाओ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, एंड फोकस ऑन जस्ट वन थिंग. आई एम टॉकिंग टू पीपल हु हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड, गॉट अ कॉल, गोइंग टू अपीयर फॉर इंटरव्यू सून. सब भूल जाओ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, यू गॉट अ कॉल. You are among those 5, 7, 8,000 people, I don't know how many people are shortlisted, who stand this wonderful chance of getting into State Bank of India as the probationary officer. Pat your back for it. It's a wonderful achievement. It's a phenomenal achievement. You have been among the chosen few, and start working for the next round. Now, when we talk about hope and all those things, देखो problem हम लोगों में भी है. Country कैसे बनता है? Country तो हम ही लोग से बनता है ना. I know people and good students, हमारे अच्छे students, जो ये बोलते थे सर मेरा नहीं होगा, आई विल नॉट बी शॉर्ट लिस्टेड. वाई? बिकॉज दे थॉट दे डन टू फ्यू क्वेश्चंस, बहुत कम किया है, कैसे होगा? ठीक है, यू माइट थिंक कि कम किया है कि नहीं होगा, ऑल दोज थिंग्स, बट स्टिल इफ यू डन वेल देयर हैड टू बी होप, फेथ होता है ना, कुछ फ़र्क पड़ता है उससे, पॉजिटिविटी थोड़ी सी अबाउट इट, किया है यार, आ सकता है. नहीं पढ़ा, नहीं सोचा, एंड सडनली दे हैव गॉट दिस कॉल. नाउ दे आर शेकिंग, कैसे करें? अभी तक तो दिमाग में ही नहीं था, दे वर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट, एंड अदर थिंग्स, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट नॉट अबाउट द इंटरव्यू. नाउ इट्स देयर. हमारी प्रॉब्लम है ना ये तो. इससे भी ऊंचे वाले लोग हैं. Yesterday somebody texted me, he said, sir, I've got a call, I didn't think I'll get a call, and now I believe I have got no real chance of converting it. कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा मैं. क्यों? बिकॉज आई डिड फ्यू क्वेश्चंस, इतने कम किए थे मैंने, फिर भी आ गया. तो वन, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ कॉल, नाउ आई गॉट इट, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कन्वर्ट इट. तो कोई फायदा ही नहीं है. पीपल लाइक दिस मेक ए जॉब ईजियर. बाकी सब लोगों के लिए कंपटीशन कम हो रहा है, एंड आई एम टेलिंग यू देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट हु बिलीव दे हैव गॉट नो रियल चांस, नो रियल चांस ऑफ मेकिंग इट. यार कैसे सोच सकते हो ऐसा? यार सोच के बताओ. हाउ कैन यू थिंक लाइक दैट? यू डिड नॉट trust in yourself when you took the paper, probably when you started preparing. You do not still trust yourself when your ability, when you got a call, when they are asking you to appear for the interview. You cleared the prelims exam, हो गया, ठीक है, हो जाता है, बहुत लोग का होता है. Cleared the main exam, again you're like, I just crossed on the border, margin पे clear हुआ है. Now you're calling for the interview. You want to appear there in front of them with this kind of confidence, with this shakiness, not believing enough in your ability or talent. ऐसे जाओगे क्या यार, बताओ? And it's not just one person. Why am I talking about this? It's so many people like that. So many people like that who believe, how can I be good enough for the State Bank of India? नहीं लगता? काफ़ी लोगों को लगता है. पहले first step of your preparation would be making yourself believe I belong to this league. They have shortlisted you. बुलाया ना उन्होंने? क्या देखकर बुलाया? सिफारिश लगाई थी? Recommendation था किसी का? Was it? No. Why did you call you? Because you are better than others. So take a moment, take a pause of a moment and tell yourself you are better than others. You belong to this league. It's just one last clap. कर सकते हैं क्या ठीक से? Can we do it? थोड़ा सा अच्छे से. वैसे भी I told you it's like a second Independence Day for us. I told you the importance of the day. Freedom. You know what should your target be for the day? Freedom from this. This kind of a mindset, this mental block. I'm not good enough. हमेशा तो फेल होता हूँ, फिर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, चलो एक और इंटरव्यू दे देते हैं. एंड दिस लिस्ट आई एम टेलिंग यू गाइज, इट्स एंडलेस. पीपल आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट यहाँ पर नंबर ज़्यादा मिलते हैं, यहाँ कम मिलता है. आई नॉट थिंकिंग अबाउट दैट. दिस सर्कल इज गुड, दिस सर्कल इज बैड, दिस सर्कल इज लाइक दिस सर्कल इज लाइक दैट. नो, आई एम नॉट गोइंग टू कॉमेंट ऑन दिस फॉर द सिंपल रीजन दैट विल फ्लड माई कॉमेंट सेक्शन विद सेइंग सर ये सच बात है, ये गलत बात है, ये हुआ था मेरा. मान लिया प्रोसेस, मैंने तो पहले ही बोला ना, जो देश की हालत है वही बैंक की हालत है. बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट बड़ी सारी अच्छी बातें भी हैं, ठीक है ना. तो इसको नहीं बात करते. व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, से आई विल नॉट नेम अ सर्कल. व्हेन यू टॉक अबाउट एन एक्स सर्कल, आई बिलोंग टू एक्स सर्कल, आई विल अपीयर फॉर माई इंटरव्यू एट दिस वाई प्लेस, राइट. व्हेन यू से दिस, ये चेंज हो सकता है? बताओ, नहीं हो सकता ना. तो जहाँ से भरना था फॉर्म, जैसे करना था, वो तो वैसे ही रहने वाला है, वो तो कर चुके हो. तो वॉट इज़ गोइंग टू हैपन नाउ? The only thing that's going to happen now is you going to appear for the interview. उसके अलावा कुछ है? कुछ नहीं है. So you cannot change that one.
Fact number one, that you're going to appear for interview at a particular place. You cannot change your panel. You cannot choose your panel. Now, I don't know if they're going to be good or bad, lenient or very miserly, कंजूस होंगे कि नंबर बांटेंगे, मुझे नहीं पता. मुझे सिर्फ एक चीज़ पता है, that you at this point can control one thing, just one thing. What is that one thing? क्या? Your performance. आप कैसा परफॉर्म करते हो, इसको कंट्रोल कर सकते हो. क्यों ना कुछ ऐसा करें, इतना मस्त कुछ, इतना जस्ट कम अप विद सच अ सुपरलेटिव परफॉर्मेंस कि कुछ भी हो बोले यार इसे तो देना पड़ेगा नंबर, बंदा इतना बढ़िया है. कुछ नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है, निकालो थोड़ा सा अपने बस्ते में से नंबर, इसे तो दे दो. कर सकते हैं क्या? ये तो हमारे हाथ में है ना. दिस इज डेफिनेटली अंडर अवर कंट्रोल. ठीक है, कंजूसी दिखाएगा, बट फिर भी व्हेन डू आई स्टैंड अ बेटर चांस ऑफ मेकिंग इट? थिंक अबाउट इट. व्हेन डू आई स्टैंड अ बेटर चांस? ओनली व्हेन आई स्टिल डू माई बेस्ट. माना मेरा पैनल ख़राब हो गया, माना मेरे इंटरव्यू में नंबर बहुत ज़रूरी है बिकॉज मेरा मेंस उतना अच्छा नहीं हुआ. फाइन, सो आई एम टॉकिंग अबाउट टू नेगेटिव्स, देयर इज नो थर्ड नेगेटिव. सो आई एम अज्यूमिंग फॉर अ मोमेंट आई एम द कैंडिडेट. आई एम अज्यूमिंग दैट आई वुड प्रॉबेबली हैव जस्ट क्रॉस्ड द कट ऑफ ऑन मार्जिन. बॉर्डर पे निकाला मैंने, ठीक है. वन नेगेटिव. टू नेगेटिव, मेरा पैनल ख़राब होने वाला है, मेरा सर्कल भी ख़राब है, मेरी लोकेशन ख़राब है, यहाँ नंबर नहीं मिलते, दोनों ख़राब हो गए. अब तीसरी चीज़ एक ही बचती है अभी यहाँ से, बिटवीन यू एंड यू एट दिस स्टेज एंड यू बिकमिंग अ प्रोबेशनरी ऑफिसर एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. एक ही चीज़ बचती है, इंटरव्यू. दोनों को खराब भी मान लिया तो भी व्हेन डू यू स्टैंड अ चांस ऑफ मेकिंग इट? टेल मी, बताओ, सोचो, बताओ कब. एक ही केस में, व्हेन यू लीव नथिंग टू चांस इन दिस थर्ड स्टेज, द फाइनल स्टेज, द फाइनल लैप. आई डोंट नो होगा आपका, नहीं होगा, क्या होगा. वॉट आई नो इज दैट इफ यू स्टिल गिव योर बेस्ट इन दिस फाइनल स्टेज, यहाँ पर I know people who get 100% marks, पूरे 100%. So many students get 100% marks. कोई बकवास नहीं, एकदम पूछ लो, 100 पूरे, आई थिंक इट्स 50 आउट ऑफ 50 आते हैं, आ जाते हैं. बहुत लोग के आते हैं, आ सकते हैं. कितना खराब हुआ है देखो. आई कैन टेल यू वन थिंग, इफ यू हैव बीन कॉल्ड यू स्टैंड अ चांस. तो एनीबडी, एनी फ्रेंड ऑफ योर्स हु टेल्स यू कि तेरा तो ना हो पाएगा क्योंकि तेरा तो अटेम्प्ट कितने थे, यू डिड 65, यू गॉट अ कॉल, अरे यू लकी डॉग, यू गॉट अ कॉल, तेरा नहीं होगा. बट कैसे आएगा? अरे तेरा तो सर्कल खराब है. नहीं बोलते, दोस्त ही होते हैं. अनफ्रेंड कर दो यार, अनफ्रेंड पीपल लाइक दैट. तेरे से 2 महीने बाद ही बात होगी, अब 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा फाइनल, तब तक बात नहीं करनी उससे. किससे बात करनी है? किसको देखना है, किसको सुनना है? जो बोलता है बेटा कॉल आ गई है, कर देते हैं इस बार काम. लुक गाइज, यू कैन नॉट चेंज सर्टन थिंग्स. इट्स वेरी सिंपल. देयर आर थिंग्स दैट यू कैन चेंज दोज थिंग्स. इट इज़ वेरी सिंपल. ये वे टास्क कट आउट, पूरे नंबर लाने इंटरव्यू में, बहुत ही सिंपल है. जो भी चैलेंजेस है, यू डोंट रिमेंबर योर कैट्स, इट्स ओके. यू नॉट श्योर व्हाट द पर्सनल क्वेश्चन, इट्स ओके. यू डू नॉट हैव अ ग्रेट पर्सनैलिटी, इट्स ओके. यू डू नॉट लुक गुड, इट्स ओके. यू लुक लाइक अ फूल व्हेन यू वेयर फॉर्मल्स एंड अ ब्लेजर एंड ऑल, इट्स ओके. वॉट एवर इट इज, जो भी है वो है, उसको एक्सेप्ट कर लो. प्रॉबेबली नेक्स्ट 6 आवर्स जस्ट एक्सेप्ट वॉट यू आर, वॉट द सर्कमस्टांसेज आर. मैं बेवकूफ़ देखता हूँ, मैं हूँ, मेरे को नॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग में पढ़ाई नहीं करी, नहीं है, एक्सेप्ट कर लिया. कैसे किसी तरीके से मेंस निकला वो भी एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट दैट, हो गया. फैक्ट रिमेन्स दैट आई स्टिल हैव अ कॉल एंड हैव टू गो एंड सिट इन फ्रंट ऑफ दैट पैनल. डू आई वांट टू मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ? बेवकूफ़ दिखना है वहाँ पर? नहीं, फोड़ देना है यार, एकदम फोड़ देना है. मतलब हो ना हो बट चमका देना है एकदम उस दिन ना. जाके एक ही तो मौका मिला उनसे मिलने का, पूछ लो जाके यार क्या चलाते रहते हो, प्रोसेस का क्या कर रखा है. इतना अच्छा तैयारी करके जाऊँगा, टाइम है, हफ्ता 10 दिन काफ़ी होते हैं. मतलब काफ़ी तो यार कुछ नहीं होता ऐसे, एंड पीपल प्रिपेयर फॉर मंथ्स फॉर इंटरव्यूज. बट या अ वीक 10 days यू कैन चेंज इट, मतलब यू शुड नॉट हैव दिस रिग्रेट सेइंग यार आई वाज सो क्लोज, प्रॉबेबली हैड आई टेकन द इंटरव्यू अ लिटिल मोर सीरियसली आई वुड हैव गॉटन. ये नहीं चाहिए यार, बस ये मत करना. बाकी ठीक है, कैसे करना है, आई एम शेयरिंग द लिंक टू अ सेशन आई डिड 8-10 months back. It has got everything. I'm sharing here in the comment, in the description box. देख लो एक बार, start doing it. It's not that we'll not do anything fresh. आप लोग को नया चाहिए होता है ना, वो भी करेंगे. But my request would be get started with this. We'll do a live session after 3-4 days. Why am I delaying it for 3-4 days? Because in these 3-4 days, you would at least start with the basics and everything. सब कुछ उसमें है, सब कुछ links and everything. It's complete guidance. Then after that, you would come up with certain doubts होंगे ना. So that will address in that live session. We'll schedule it here on the channel. सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, पता चल जाएगा आप लोग को. उसमें जो भी आपका फर्दर कुछ होगा
that we'll address. कुछ और चाहिए होगा that we'll do. Don't worry about all that. But here it's complete guidance for you. Get started, guys. It's your chance. It's your big chance. It's the big fish. कितने सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं आरआरबी वगैरह में सिलेक्ट हो गए एंड दे आर नाउ लिटिल कॉम्प्लेसेंट अबाउट इट. नहीं सर एसबीआई में तो सेल्स का प्रेशर है. यार मतलब ये आपने सुना ना अंगूर खट्टे वाली वो बात तो नहीं है. देखो अगर नहीं जाना एसबीआई मत जाओ, छोड़ो, अपना बेवकूफ़ मत बनाओ, बुरा मत मानना, समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा हूँ. अगर एसबीआई में सेल्स का प्रेशर है इसके लिए नहीं जाना चाहते हो तो छोड़ दो, इंटरव्यू एग्जिस्ट नहीं करता मेरे लिए. अगर आपको ये डर लग रहा है कि यार कहाँ कर पाऊँगा, ये कंफर्टेबल है, यहीं रहूँगा अपने घर के आसपास ही, तो ठीक है, टेक अ कॉल, फाइन. ये दोनों नहीं करने एक साथ में ना. यू गेट द पॉइंट. डोंट डू इट टुगेदर. मीन आई एम गोइंग फॉर द इंटरव्यू बट आई स्टिल वॉन्ट एन आरआरबी जॉब. तो मैं सेटल्ड हूँ ना, बढ़िया, fine. The way you should think would be, if you decide to go there for the SBI PO interview, I have this RRBPO job or whatever job you have already. You are working as a clerk in SBI, whatever. I have this, so I am under no pressure. मैं तो सेफ हूँ. अब एकदम बिंदास जाके दूंगा. कॉम्प्लेसेंट नहीं होना. You don't have to be complacent, but you can be very confident as compared to somebody जो बेचारे के पास कोई जॉब ही नहीं है अभी. उस पर थोड़ा सा प्रेशर तो होगा ना, उसे भी तैयारी करनी है, आपको भी करनी है, बट इस विश्वास के साथ जाओ, इस तैयारी के साथ जाओ, इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओ. स्पीक विद कन्विक्शन. कोई बात नहीं सर, नहीं लोगे, जॉब तो ऑलरेडी है मेरे पास, नहीं है अलग फीलिंग. बट अगर आप इसको ऐसे ना अंडर कॉन्फिडेंट हो या कैजुअली ले रहे हो या नहीं, इट्स नॉट डन. यार इट्स वेरी कंपेरेटिव. ह्यूज कंट्री, 2000 odd वैकेंसीज, इट्स अ कवेरेड जॉब, ऑल सेड एंड डन. बहुत बड़ा जॉब है यार, ऐसे नहीं हल्के में ले सकते. टेक इट सीरियसली, गेट स्टार्टेड. Do every task religiously from the video I am sharing here. सब कुछ करो, हो जाएगा हफ्ते 10 दिन में. It takes time. Be patient. रेडीमेड आंसर्स किसी से नहीं मांगने हैं, उसमें सब कुछ मैंने बताया हुआ है. जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. विल मीट अगेन आफ्टर 3-4 days. I will talk in detail about things that are still troubling you in a live session, right? दोबारा से मिलते हैं, लाइव में मिलेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी एड्रेस करेंगे. टेक्स एन आवर, 2 hours, whatever. But get started, guys. It's very important that you take this seriously, that you forget all the follies, all the problems of State Bank of India and embrace it now. नौकरी करनी है यार, वहाँ पर प्यार करना पड़ेगा, करेंगे. फाइन, प्रोसेस को समझ लो ठीक से एंड तैयारी करना स्टार्ट कर दो. आई एम नॉट श्योर दे गोइंग टू कंडक्ट ग्रुप एक्सरसाइज. आई डोंट थिंक दे वुड, क्योंकि क्लियर नहीं है उससे. बट आई थिंक सिर्फ इंटरव्यू होगा, तो टेंशन मतलब अगर होगा भी तो वो बता देंगे क्या होता है. बट इंटरव्यू इज द थिंग फॉर यू. एंड ट्रस्ट मी गाइज, एंड आई एम नॉट लाइंग हियर, you cannot change your quantitative aptitude skills in 5 days, 10 days. English in 5-10 days. It takes time. Some things do take time. But your performance in an interview can change drastically in just 10 days homework. Yeah. And it would have been good had you been already prepared. बहुत सारे लोग already prepared होंगे, बस वेट कर रहे हैं उस दिन का. But अगर आपने कुछ भी नहीं किया, not done anything till now, from this stage till the time your interview happens, whatever time it is, 10 days, 15 days, I'm not sure, it'll be different for different people. Again, suspense तो SBI का तभी खुलेगा जब आपके पास आ जाएगा. तो तब तक का भी टाइम काफ़ी है. बट what is important? First, believe in yourself. What I already said. I belong to this. मौका मिल गया, इस बार छोड़ूंगा नहीं. वो ऐसे नहीं होता कुछ फ्रिंज प्लेयर टीम में घुस जाते हैं. देखो मैं फिर क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, और वो सोचते हैं कि अब की बार नहीं छोड़ूंगा, यही तो मौका मिला है, फिर किसको पता नहीं कब इंजरी होगी. वैसे समझ लो अपने आपको, वैसे ही वाला हूँ. हाँ, कि बस मौका मिल गया, अब नहीं छोड़ना. टीम में किस तरीके से घुस गया, अब नहीं छोड़ना. वही है, मौका मिल गया है, परफॉर्म करने का मौका मिला है, करते हैं यार, करते हैं ना. लग जाओ अभी से, बहुत टाइम है, हो जाएगा. सब कुछ बताया हुआ है. वॉच दिस सेशन, डू इट सीरियसली, वेरी सिंसियरली, with the belief that I can do it, that I will do it, that I have to do it. I have to prove those idiots wrong, my friends. उसे कि तेरा कोई चांस नहीं. Unfriend. ठीक है, चलो, I'll see you again. Wish you a very happy Republic Day once again. जय हिंद.